Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Myself, Bhavin sir. Now, today we have to learn Standard 5 Math Magic. And then last time we had completed chapter 10, 10th and 100th. Right? Now, today, students, we are going to learn a new chapter, area and its boundary. So, you know what is the meaning of area? Area means the place which occupied by the object. मतलब एरिया मतलब ऐसी चीज, ऐसा एरिया मतलब कोई भी चीज जो जगह रोकता है उसको एरिया बोलते हैं. So let's start our chapter. Now see here the question number 1 of 11th chapter, area and its boundary. So slowly we have to go ahead. What is area? I will teach you. Just now you see question number 1. Tick right on the figure which has more area. मतलब जिसमें ज़्यादा एरिया है उसके आपको टिक करना है. ओके मतलब जो बड़ा है. नाउ यू सी ए एंड बी, विच वन इज मोर, विच हैविंग मोर एरिया. Yes, A having more area. So you can write, take here A. Then in question 2, number 2, A and B which having more area. मतलब कौन सा शेप ज़्यादा जगह रोकता है. This B contain required more place, right? More space. Same question 3, which required more area. ये बी मतलब जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड करता है. द ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाइड मोर स्पेस, दैट हैव टू राइट हियर, दैट इज कॉल्ड द एरिया. द स्पेस विच ऑक्यूपाइड बाय द सब ऑब्जेक्ट, that is known as area. Now here for number A and B, out of that both of you, which one required more space? A, right? ये आप खुद ही समझ सकते हो. और जो जगह रोकता है मतलब ऑक्यूपाइड करता है उसको एरिया बोलते हैं. नाउ हियर क्वेश्चन 5, which one have more? So obviously A having more area, right? So this is called area. कोई भी शेप हो. Now this is question 6, A and B. This A having more area. Yeah. Then next one. Now which required more space? So here also A having more area. Now this is which required more space, which have more area. The figure B have more area. Then now the stars. Out of the stars, which stars had taken more space? Yes, B required more space. To tick karo. Then these two cross are there, which required more space. Obviously B को ज़्यादा जगह चाहिए. So this way here in the first question you have to write, tick the space which required more area, the object, the shape which required more area. ऐसे आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है और ये लिखना भी है. आई विल सेंड यू द कॉपी ऑफ दिस ऑल्सो इन योर नोट अवर ग्रुप में मैं भेज दूंगा. ओके ये ड्रॉ करने का ज़्यादा था इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है जिससे आप भी उसको अच्छी तरह से कर सको, बराबर, और आप सब लोग उसको तोड़ सको, इसलिए मैंने आज का सेशन वीडियो में लिया है. सो एवरीवन मस्ट ड्रॉ दिस एंड राइट दिस इन योर नोटबुक. और मैं ये प्रैक्टिस वर्क में से चला रहा हूँ तो ऐसा सेम टू सेम वर्कबुक में होगा, वो आपको होमवर्क में करना है वर्कबुक के अंदर, जैसे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो. ओके फॉर योर मोर प्रैक्टिस आई हैड टेकन एक्स्ट्रा वन.
Now next question, see, answer the following questions from figure given in the graph paper. So here is the graph paper given. In that some shapes are given, right? Now some shapes required some square. So we have to count the square first. We have to count first square and then give the answer of these questions. So see, one box that means 1 centimeter. It is 1 by 1, right? So one box is 1 by 1. That way we have to count it. So हम यहाँ पे खाली बॉक्स काउंट करेंगे. सो देखो एक बॉक्स होगा, तो हमने पहले भी ऐसे आपको सिखाया है मैंने, राइट? तो फोर्थ में भी हमने सीख लिया है. अगर 1 बॉक्स है तो 1 गिनेंगे, और हाफ बॉक्स है तो 2 हाफ मतलब 1 गिनेंगे. सो यू सी हियर, ये 1 2 3 4, राइट? 4, फिर ये आधा आधा एक करे मतलब कि 5, ये 6 7 और 8. So this way its area is 8 square centimeter, right? So we have to write this. आप उसको समझो और ऐसा आप ड्रॉ करके लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो आपको वर्कबुक में जो दिया है उसमें से प्रैक्टिस करना है. नाउ सी दिस अबाउट द बी, जस्ट काउंट इट. हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 8 are there, right? Now count here. So पहले पूरा बॉक्स गिनेंगे तो 1 2, then this is 3 4, right? Then this is 5, then this 6 दोनों मिला के, yes 7. So this is also 8. It also contain 8 squares, 8 centimeters. Now count this, it's a 1, ये 2 आधा आधा 2, और ये आधा से ज़्यादा है मतलब 3. So total is 3. It's near about 3. Okay, now this contain it's a 1. आधे से ज़्यादा हो तो एक एक गिनने का, पूरा गिनने का है. 1 2, it's 3 4 5 6 7 8. It's also having 8. Now for this 1 2 3 4 5 6 7, और ये आधे से ज़्यादा है मतलब 8 9, और ये भी आ जाता है 10 और 11. So this must be 11. Now about this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is, it's a 10. आधे से ज़्यादा हो तो उसको पूरा गिन देने का, और आधा आधा हो तो 2 आधा, 2 हाफ, 2 हाफ 1. So here 1 2, this वो दोनों मिला के 3 4 5 and the 6, right? So 1 1 2 3 is 6, and this half 7. So it is 7. Now what about this? This is, see, 1 2, then 3, ये पूरा एक 3, then बाकी सब आधे से कम है, that contain 3, we can consider as a. Now about this here, 1 2 3, पूरा ही गिन देते चलो. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So it contains 12. Now give the answer. Which shape has the biggest area? How much? तो इसमें से देखो कौन से शेप को बिगेस्ट एरिया है. यस 12, राइट? सो J shape, J have biggest area. How much? To 12 square centimeter. Now which shape has the smallest area? How much? तो smallest area किसका है? इसका है 3. This 3, it has also 1 2 and 3. इसका भी गिने तो ये आधे से ज़्यादा 1 2 3, इसको ज़्यादा होगा, बाकी सभी लगे 4 होगा. सो डी शेप
have the smallest area, that is 3 square centimeter. इसको हमको 4 गिनना पड़ेगा, हाँ, कि इससे ज़्यादा कवर करता है. Then now, which is the difference? What is the difference between the area of B and C? So B and C both are same, right? अब B and C में difference क्या है? Actually, let's count once again. It's a 1, 2, right? Then it 3, 4, 5, 6, 7, और ये आधा आधा 8, और ये और ये also 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. So both are equal. There is no difference. So we can write here no difference. Now, which is the difference between the area of H and J? So area of H figure, where is H figure? Yeah, 7 and he's 12. So it is 12 minus 7. So that is 5. Right? It is 12 minus 7, that is 5 square centimeter. Now, which shape has more area from A and D? अब A और D से ज़्यादा है, तो A having 8 and then D also having 3. तो which shape has more area from figure A and figure D? A और D से ज़्यादा हो, तो A और D से ज़्यादा हो तो खाली 12 एक ही है. So it is answer is J and it is 12 square centimeter. Right? So dear students, this way you have to count. This is and write in your notebook. Right? ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. Then you see, this is also you have to count. Answer the following questions from figure given to the graph paper. Now 1 centimeter 1. अब इसका हम आंसर बॉक्स फाइंड कर देते हैं. ये बॉक्स कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. This is of 21. Now this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. It's a 16, right? Then here see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Now this is E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. It's a 14. Or here about D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. It's also 14. Okay, now which figure has the biggest area? So you see this is 21, 16, 12, 14, 14. So figure A have the biggest area, right? Now which figure has the smallest area? तो 21, 16, 12, 14. तो 12 का सबसे कम है, तो C. Here how much? So इसमें biggest area में 21 square लिख देंगे and see how much it is a 12 square. तो ऐसे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. Now if in the area of figure B more or less than the D, so A, B and D, तो B का कितना है भाई? B having 16 and the D having 14. So B is more, right? So B more. How much more? 16 and 12. That means 4 square more. Right? Which two figure have the same area? तो इसमें सेम एरिया वाला कितने फिगर है? ये E and D. So answer here E and D. So these are having the same figure. So this is what you have to write in your notebook. ऐसा आपको बॉक्स नोटबुक में दूर के ये क्वेश्चन करना है. और ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपकी वर्कबुक में दिए हैं, दैट यू हैव टू फिनिश
फ्रॉम योर वर्कबुक। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, वी हैव टू डू गो अहेड। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, ओके, बाय बाय।